All right, so let's begin this test. Okay, so let me just ये start test को click करता हूँ मैं. So test is about to start. All right, so let me see RCs. The Bermuda Triangle did not receive its famous nickname, Bermuda Triangle. ठीक है यार, Bermuda Triangle तो ठीक है, we all know about it, right? So this is a concrete thing, not abstract. तो इसको शुरू में रख सकते हैं. Let me go to the second RC. 4 important ideas emerged from MAC6 taxonomy of genetic diseases. First, MAC6 realized that mutations in a single gene can cause diverse manifestations. Okay, ठीक है. Genetics के ऊपर है, taxonomy the classification of diseases के ऊपर है. ठीक है. Not exactly second, maybe. Let me see the third one. Nobody likes a troublemaker at work. We all had colleagues who annoy us or deviate from the script with no heads up, causing conflict or wasting time. ठीक है, ये तो workplace के ऊपर है. Troublemaker or whatever it is. So workplace is again a concrete thing for me. I'm okay doing those kind of passages. So fine, I'll put it at number 2 as of now. So as of now, 1, 2, 3 हो गया है मेरा. Let me see the next one. So the next one talks about idea of technologically enhancing our bodies is not new, but the extent to which transhumanists take the concept. We made devices such as wooden legs, hearing aids, spectacles, false teeth. Okay, so transhumanism means अपने body को augment करना किसी न किसी external devices के through. Okay, so this also would come later on. So maybe 1 and 2 is decided, Bermuda Triangle, and the second one troublemakers. Now either that taxonomy one or this would come third or fourth. अभी मैं इसमें नहीं घुसूंगा. अभी मैं जाके सीधे VA section पे चले जाऊंगा. ठीक है, let me first do the VA section. Let me go to VA section first. Okay, now, all right. So the normative ideas that provided the basis for this European identity were defined in opposition to, ठीक है. During the Cold War, European spaces were enlarged by and large. Consequently, the predecessor, that of course does not mean. Okay, so opening statement cannot be 3, cannot be 4. Opening statement can be 1. No, not 1 also, because this European identity is में. So opening statement can only be 2. Okay, so 2 से start कर देंगे हम. So 2 से start कर दिया इसको हमने. During the Cold War, European spaces were and by large overlaid by the political semiotics of US foreign policy, positioning Soviet as US. Consequently, the predecessor of European Union, the European Economic Community, was identified as Western Europe. Okay, in contrast to Eastern. That of course does not mean the space was. The normative ideas form the basis of this European identity. So this European identity किसके लिए है? Is it for? So it cannot come after 2 because there is no mention of any European identity. That of course, तो 2 के बाद 4 नहीं आ सकता और उसके बाद 1 नहीं आ सकता, तो 2 के बाद में so this European identity should follow, I think 3, and therefore 2 के बाद में 3 आ सकता है. Consequently, the predecessor of European Union, the European Economic Community, was identified as Western. That of course does not mean the space was culturally okay. This space refers to maybe Western Europe. Normative ideas, this European identity. Okay, so ठीक है, थोड़ा सा confusion है इसमें. So it could be 2, 3, 1, 4, or it could be 2, 3, 4, 1. थोड़ा सा normative idea that provided the in opposition to East communism. That of course does not mean that this 2, 3, 4, 1 I would go for. Okay. Let me go to the next question. This was a little challenging question. इसके ऐसे question पे हमें बहुत time spend नहीं करना चाहिए. Okay, because there was a confusion there. अभी भी I am not sure कि मैंने सही mark किया कि नहीं किया, but ठीक है, जो भी किया. All right, let me look at the second question. This says the bacterial tenants gave up their tough outer coats and their independence just as alkyl cells do when they unite with fungi. Okay, bacterial tenants. The algae's verdure reflects an older union, just levels of pigment. Okay, through यहाँ पे bacterial tenant, अभी it is too premature to come in one. Through a cascade of chemistry, this energy is transmuted into bonds. Okay, sugar power, sun catching, fine. Second पे नहीं आएगा कुछ. The bottle green chloroplasts are descendants. तो क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है ये वाले सेंटेंस में, सन कैचिंग पिगमेंट्स के बाद में देन द बॉटल ग्रीन क्लोरोप्लास्ट. सो इट डजंट लुक एज इफ इट वुड कम इन 2 बिकॉज यहाँ सेकंड के पहले क्लोरोप्लास्ट है, सेकंड के बाद क्लोरोप्लास्ट है, तो वी विल नॉट ब्रेक दैट थॉट. इनसाइड अल्गेल सेल्स 1. ओके, अब बैक्टीरिया आ गए. ओके, नाउ बैक्टीरिया हैव कम इन. द बॉटल ग्रीन क्लोरोप्लास्ट आर डिसेंडेंट्स ऑफ बैक्टीरिया दैट टुक अप रेजिडेंस इनसाइड अल्गेल सेल्स 1.5 billion years ago. Okay, now it can come in 3. Bacterial tenants gave up their tough outer coats and their independence just as algal cells do. Chloroplasts are not the only bacteria living inside other creatures.
All plants animals are inhabited by torpedo shaped mitochondria and this is for the bacterial. See, so it won't come in 4 because 4 में अभी कहानी चली रही है, कहानी खत्म नहीं हुई, तो I think it should come in 3. So I'll mark the option 3 here. Let me go to the next question. Okay. Operationalism as a methodological dogma never made sense so far as the social sciences are concerned, except for a few rather too well swept corners. Skinnerian, okay, is largely dead now. It had one point which trying to define charisma, alienation in terms of operation. You want to understand what science is? Quite complex, certainly not at what its apologists show. Okay, you should look at. Okay, very dense summary. Okay, so let me just quickly again go through it. Operationalism as a methodological dogma never made much sense. Okay, operationalism, except for rather two well-swept corners. Okay, it is largely dead now. Operationalism dead over here, but it had for other all that important point to make. We may feel about trying to define charisma. It retains a certain force. Okay, if you want to understand, you should look for theories. So operationalism, मतलब basically practitioner. तो operationalism dead हो चुका है, लेकिन अभी भी उसकी relevance में चाहिए तो हमें science से मिल सकती है, something like that he's saying. Let me now go to the options. Operationalism outside social sciences is largely dead. Okay, despite the importance and force of points it made precisely about scientific theories, findings. Despite the importance and force of points it made, outside social sciences is largely dead. Okay, तो थोड़ा सा गड़बड़ दिख रही है वन में. Let me look at the next one. While operationalism has all but disappeared, the point it made about understanding science by looking at those who practiced it is significant. Barring theoretism, operations is largely irrelevant at a time when science is all about what practitioners do. The methodological dogma gives the most powerful point that can be best understood from viewpoint. Okay, fourth में ये नहीं बताया कि वो dead हो गया है. Barring this, second, third also doesn't look okay. While operationalism has all but disappeared, the point it made about understanding science by looking at those who practice. Yes, this looks fine to me. Has all but disappeared. Okay, and science में हमें वो देखना चाहिए जो उसको practitioners कर रहे हैं, right? So those who practice it is significant. Fine, I will go with 2 here. All right, we are not doing very good on time. Okay, already time जल्दी निकल रहा है. Fine, so I'll have to wind it up in by 28 or so. Okay, humans are culturally complex beings and science is always influenced by personal factors. Although the scientific method has built-in mechanism to ensure that it is objective and bias-free, it does not exist in vacuum. Cultural factors influence, okay, among other things. Before the 70s, for example. So we cannot start with 4. Okay, so 1, 2, and 3, all 3 are independent sentences. Humans are culturally, science is influenced by personal and cultural factors, and cultural factors and historical issues influence, among other things, the kind of questions being asked. Before 70s, for example, most research suggested. Okay, so 3 and 4 are linked because 4 is exemplifying the kind of questions being asked. So 3 or 4 इसमें link कर सकते हैं, and 1 उसके पहले आ सकता है because science is influenced by personal and cultural factors. So cultural factors influence what all, that is given in 3. Although the scientific mechanism has built-in mechanism to ensure it is objective, it does not exist in vacuum. Okay, this can be the opening statement, right? So 2, 1, 3, 4 मुझे लग रहा है इसमें. Although the scientific method has built-in mechanism to ensure it is objective, it does not exist in vacuum. Humans are culturally complex. Science is always influenced. ठीक है, fine, no problem. And cultural factors influence kind of questions before 70s. Fine. 2, 1, 3, 4. I'll go for it with a fair degree of confidence here. पहले वाले में मुझे नहीं था confidence, इसमें मुझे काफी confidence है कि ये ठीक हो सकता है. Okay. The important property is that Bell's inequalities hold for all classical theories one can think of, no matter how convoluted. Okay, Bell's inequalities hold for all classical theories. Okay. We now know that Einstein institution was wrong. Bell showed that quantum effects cannot be modeled by any classical theory. Bell's inequalities. Okay, so Bell की कुछ inequalities हैं वो अभी तक नहीं आई है, तो 1 में तो नहीं आ सकता. He envisioned a type of experiment now called a Bell test, involving 2 experimentalists. ठीक है, sometimes someone in a third location send them which they measure independently. अभी भी इसमें inequality की तो कोई बात नहीं हुई है. ओहो, आ गया inequality. Okay, let's look at this sentence. Bell proved that in any classical theory with well-defined properties, results of these measurements obey some conditions known as Bell's inequalities. Fine. Now we have Bell's inequalities, so either it can come at 3 or it can come at 4. It cannot come at 1 and 2. So अब क्या 3 पे आएगा? The important property it holds for all classical theories. Then Bell proved these conditions. These conditions refers to the conditions given in the sentence before 3 blank, right? So some conditions and these conditions. That means 3 में आएगा तो फिर वो thought break हो जाएगा यहाँ पे, because some conditions or these conditions. So it cannot come in 3.
should not come in 3, right? Let's look at 4. The important property that wealth inequalities hold for classical theories. Therefore, their violation refuted all such theories. Okay, right. So we've got it now because ये जो लास्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है refuted all such theories और यहाँ पे classical theories लिखा हुआ है. तो अगर हम fourth पे नहीं लगाएंगे, then these such theories should refer to something which is given in this sentence before fourth, which is not given. Therefore, fourth is a safe place for this sentence to come. फोर्थ पे आ गया. चलो ठीक है, कितने मिनट हो गए यार? 29. मतलब अभी मुझे क्विकली करना है. लेट मी गो टू दिस वन. इकोनॉमिक्स asks and attempts to answer 2 questions, positive and normative. Positive attempts to understand behavior and operation of economic system without making judgments. It tries to describe what exists, what works. In contrast, normative looks at outcomes of economic and asks whether they are good or bad and whether they can be made better. Normative involves judgments and prescriptions for courses of action. Normative is often called policy. Okay. 2 टाइप की इकोनॉमिक्स होती हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव. पॉजिटिव में बिहेवियर अंडरस्टैंड करते हैं और ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमी विदाउट मेकिंग जजमेंट्स. ओके, जो भी है उसको वैसे ही डिस्क्राइब कर देता है वो. देन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो आउटकम को देखता है और पूछता है कि वेदर गुड और बैड एंड वेदर दे कैन बी मेड बेटर. ये जजमेंट करता है, प्रिस्क्रिप्शन भी देता है. ठीक है, ओके फाइन. तो पॉजिटिव जो है वो जजमेंट नहीं देता, वो सिर्फ स्टेटमेंट देता है क्या है, और नॉर्मेटिव हमें बताता है कि वो खराब है, अच्छा है, और उसको ठीक करने के लिए अगर खराब है तो क्या करना चाहिए, राइट? सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी देयर इन द ऑप्शन. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ऑब्जेक्टिव इन जजिंग द आउटकम्स व्हाइल नॉर्मेटिव इज सब्जेक्टिव इन नो 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 नो, बिल्कुल गलत है. नॉर्मेटिव तो बिल्कुल ही गलत बताया इसने. और ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं लिखा है कि पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ट्राइज टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक बिहेवियर व्हाइल नॉर्मेटिव ट्राइज टू जज इकोनॉमिक बिहेवियर. ओके ओके, अंडरस्टैंड बिहेवियर बताया वहां पे और नॉर्मेटिव बताया है कि जज करना चाहता है. लेकिन इसमें एक चीज मिस हो गई कि ये गुड और बैड है और उसके बाद कैसे उसको बेटर बनाए. तो प्रिस्क्रिप्शन वाली बात इसमें कैप्चर नहीं हुई है. तो लेट मी सी इफ देयर इज one that captures prescription also. Otherwise, this looks okay for the time being. Difference between positive and normative is in the way former analyzes the economic, while latter judges the difference in the outcomes. Difference between this is in the way former analyzes and latter, while latter judges the difference in outcomes. इसमें भी वो तो बात की नहीं है कि कैसे उसको बेटर बनाना है. तो this also looks suspicious. While positive economics comprehends, okay, comprehends means understands. Normative tries to identify the nature of outcomes of such systems and right paths to deal. Okay, मिल गया, right? So 2 और 4 में हमें different मिल गया, which is that this is also prescriptive or recommendatory. तो इसलिए 4th को मार्क कर देंगे with a good degree of confidence and we'll move. Okay, अभी टाइम ज़्यादा चला गया, ज़्यादा कोई बात नहीं. ठीक है, let me see. Domination is not only viewed as a structure of power that demands obedience, but as a structure of power that demands obedience resulting from the will to obey. Domination has the probability of finding obedience. The kind of pretension that whole power, traditional, charismatic, rational, legal. Traditional domination is based on study wheel of scientific customs. Charismatic is based on personal gift of a heroic figure with a state of grace. ये भी dense passage है. ठीक है, इसके बाद अभी थोड़ा रख देता हूँ उसको. Let me look at the last question here. It was worthwhile to speak out on this. However much they differ, Victorian essays yet had something in common, but a change came from a small audience. ये तो देखा हुआ सा लग रहा है यार. Came from people to a larger audience who are not quite so cultivated. They wrote of greater length and they wrote for a public. ठीक है, ये तो लग रहा है कि हमने कभी किया हुआ है. Anyway, let me. But a change they wrote cannot come. It was worthwhile cannot come. So start to 2 से होगा. So we'll put 2 as the starting point here, right? 2 को starting point बना दिया हमने. Then we go to. However much they differ, Victorian has something in common. They wrote at they. This they refers to this guy, right? So they को हम आ जाते हैं इसके बाद सीधे 4 पे. And then we say that it was worthwhile to speak out, but a change came, right? But a change, so ये last में आएगा क्योंकि वो एक direction change हो रहा है. 2 2 4 1 3 लगा देते हैं. 2 4 1 3 seems to be a pretty decent, reasonable thing here. So ये करके फिर हमने इसको सेव कर दिया, right? अभी we have 26 minutes left. तो ये domination वाले को थोड़ा रुक देता हूँ मैं अभी इतना टाइम नहीं है. Let me go to the RCs first. Okay. Bermuda Triangle did not receive its famous nickname. It's a mythical section. Okay, its vicinity is one of the most traveled shipping lanes. Many ships vanished. Okay, William Shakespeare, Tempest, Meher, Christopher Columbus wrote a bizarre compass. My legend will be forever tied to Flight 19. Torpedoes in Atlantic scheduled to take them east included a few bombing practice runs. Crewmen of 5 Avengers exception was forced. Taylor chose to continue run on dead reckoning, navigating by side, but visibility became poor. It ended up thinking they were over the petrol. But देखो ये कहानी टाइप के पैसेज हैं, इसलिए आप देख रहे हो कि मैं आई एम जस्ट क्विकली मूविंग ओवर इट. ओके, ये बिल्कुल प्योरली कहानी है, इसमें कोई
ऐसे एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी है ही नहीं टेलर, इसलिए इस टाइप की इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जस्ट पॉइंट mistakenly leading his recordings indicate that some of them suggested actually nearly be reported Avengers had disappeared, they floated to Mars. No known wreckage from Titan has ever been discovered. ठीक है, Avenger was not rugged plane, heavy. ठीक है, rescue aircraft was deployed, it also disappeared. Okay, tanker reported seeing an explosion, observing a widespread oil. Contemporaneous sources of marine had a history of explosions. Fine. Controversial disappearance have been attributed to machination of extraterrestrials, alien. Okay, there are some obstacles in taking this legend seriously. Much of the associated can be explained rationally within this. As distant as this, we might just as well rename worldwide curse. Some have turned this fact on its head by proposing this evidence that expanding. Others may respond that evidence extends happen no matter what. Okay, fine. तो ये कोई डिफिकल्ट पैसेज नहीं है, पढ़ने में बहुत ही आसान है, कोई भी इसको पढ़ लेगा जल्दी से. इसमें बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बताया गया. ओके कि इसमें ठीक है. तो अभी मैं क्वेश्चन पे चले जाता हूँ, क्योंकि कहानी समझ में आ गई है. So we can go to the question in the interest of saving some time. The primary purpose of the author in the passage. तो पैसेज में कर क्या रहा है वो देखो. पहले उसने क्या किया कि उसका बताया कि नॉट रिसीव निकनेम, फिर many ships have vanished, शेक्सपियर का टेम्पेस्ट भी है, लेजेंड में बताया गया कि एक फ्लाइट 19 यहाँ पे गायब हो गई थी. उसमें कोई ट्रेनी लोग थे, एंड देन ये इसको अपना सिग्नल नहीं मिल रहा था, एंड ही वाज लॉस्ट, mistakenly leading Navy Avengers had disappeared. ठीक है, Avenger was known to be extremely rugged, और रेस्क्यू भी गायब हो गया उसका. और कंट्रोवर्शियल से बताया गया कि बहुत सारे अलग अलग थ्योरी थी, लेकिन बर्मुडा को वो सीरियसली नहीं ले रहा है. ओके, ही इज गिविंग सम अल्टरनेट रीजनिंग, जिससे ऐसा कुछ नहीं है, कोई देयर इज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट. तो प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर इन द पैसेज इज टू रिपोर्ट न्यू रिसर्च फाइंडिंग. देयर इज नो न्यू रिसर्च फाइंडिंग हियर. इंट्रोड्यूस एविडेंस दैट इनवैलिडेट्स प्रीवियसली हेल्ड व्यूज. इसने कोई एविडेंस तो नहीं बताई है. ही हैज जस्ट रिकाउंटेड व्हाटएवर वाज गिवन. Initiate a debate about a well-known phenomenon and to present arguments that could call the phenomenon into question. Yes, why not? Evaluate the causes. No. वो cause क्या evaluate करेगा? कुछ नहीं कर रहा. तो he is initiating a debate about a well-known phenomenon and presenting argument that call the phenomenon into question, that whether there is something mysterious about this Bermuda Triangle or not. Okay, so very straightforward question है. इसको हम आगे चलते हैं अब. नहीं, ये क्या करना? ये इसको किया मार्क मैंने. Debate. Hey, please shut up. Put your mic off. Okay, you are not speaking, and don't chat also. यार मेरे को distract मत करो. कोई लोग मैसेज भेजना है, please don't do that. Okay, टाइम बहुत तेजी से निकला जा रहा है. The word contemporaneous in para 6 means contemporary. तो बहुत easy word है यार. Contemporary means present. तो इसका क्या निकाला? Existing at the same point of. Yes, correct. Temporary recurrence, no, not at all. Eliciting strong feelings, no. Capable of. बहुत easy question है. Existing at the सेम पीरियड ऑफ टाइम. कंटेम्प्रेरी मीन्स उसी टाइम पे एग्जिस्ट करना. ओके, तो इसको हमने मार्क कर दिया. आगे चले गए थर्ड पे. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डिसअपीयरेंस ऑफ फ्लाइट 19. ओके, तो डिसअपीयरेंस ऑफ फ्लाइट 19 वाज सो लेजेंडरी दैट इट लेड टू बर्मुडा ट्रायंगल बीइंग क्राइस्टेंड. सो तो क्या बर्मुडा ट्रायंगल का नाम इस फ्लाइट के कारण पड़ा? लेट मी. बर्मुडा ट्रायंगल डिड नॉट रिसीव इट्स निकनेम अंटिल 64. ओके, और ये जो फ्लाइट थी 19, दिस डिसअपीयर्ड इन 1945. तो ये कैसे हो सकता है? 1945 में वो डिसअपियर हो गई, एंड दिस रिसीव्ड इट्स नेम इन 64. तो ये तो नहीं है, नॉट वन. तो दिस इज रॉन्ग. द डिसअपियरेंस ऑफ फ्लाइट 19 हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू द टेम्पेस्ट. टेम्पेस्ट तो शेक्सपियर का प्ले है, उससे कैसे हो सकता है? रिडिकुलस ऑप्शन. कॉन्करेंस ऑफ मैल फंक्शनिंग मैग्नेटिक कॉम्पास, एब्सेंस ऑफ रेकेज इज टू रिमार्केबल टू बी ट्रू. ये कैसे हो सकता है? The disappearance of 5 crafts without any evidence of a crash or debris gave birth to many atypical interpretation. Yes, ये तो ठीक लग रहा है कि ये जो इसके फ्लाइट 19 में देवर 5 एयरक्राफ्ट, राइट. ट्रेनिंग फ्लाइट थी, इसमें क्रूमैन ऑफ 5 एवेंजर्स, राइट. तो ये गायब हो गए थे, तो इसको लेके इन्होंने अलग अलग टाइप के इंटरप्रिटेशन. तो दिस लुक्स ओके टू मी. लेट मी लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. What does the author imply when he says we might just as well rename it the worldwide curse of all seas? Okay, let me look at where it is written here. कहीं पे पढ़ा था हमने एंड में, शायद कहीं पे curse of all seas. हाँ, ये लिखा हुआ है एंड में. तो there were some debates. Most of the obstacles within the sea disasters such as this have been worldwide curse. Some of them. तो ये कह रहा है भाई, ये तो बहुत दूर दूर तक हुए हैं, पोर्चुगल, आयरलैंड, पैसिफिक ओशन में हुए हैं, तो इसलिए why to call it Bermuda Triangle? We can call it worldwide curse of sea. Okay, ठीक है. Storms on any sea are mainly responsible for disappearance. Storms on any sea, ऐसा गलत. Specific geographic locale being held liable for calamity in other region is exaggerating the myth. Yes, why not? Topographically limited phenomenon can possibly influence catastrophe in all seas. ये कैसे हो सकता है कि बर्मुडा ट्रायंगल जो है वो दुनिया भर के समुद्र में हलचल मचा दे?
Influence of devil's triangle is expanding to other seas has no, बिल्कुल. तो इसलिए second is the correct answer here, and we will move on to the next passage. Okay, so ये question हमने, ये passage हमने जल्दी कर लिया, fortunately, because we got an easy passage. Now I'll go to the second passage, which I said was the taxonomy. No, taxonomy, sorry, troublemaker. Okay, so nobody, 19 minutes बचे हैं. Nobody likes a troublemaker at work. We have all had colleagues who annoy or deviate from script, causing conflict or wasting time. Show-offs who seem to be difficult. Find, makes worse off. There are other people who know how to turn rule breaking into contribution. Rebels deserve our respect and our attention because they have a lot to teach us. Now, the biggest lesson to learn is, given a challenging, we must decide what is we should do instead of asking what we could do. Okay, with a dinner experiment, give particular different ethical challenges. There seems to be no good choice. I then asked, what is it? Either what should you do or what could you do? Good group was able to generate more creative. Opportunity problem, which is should mindset, gets us stuck on the trade-off choice and narrows the thinking. One that seems most obvious. Could we stay open-minded and trade-off? Okay, तो could और should. Could में मतलब बहुत सारी possibilities हैं. Should में आप वही जो ethical लग रहा है वही करोगे. Moral responsibility हो जाती है should में. हमने पढ़ा था इसमें. At work, of course, what could we do with the person who's slowing things down? What questions keep adding? But rebels understand it's always worth resisting time pressure. Okay, तो rebel लोग थोड़ा time ले लेते हैं चीजों में. Another problem people have with rebels is the conflict sometimes with alcohol. Conflicts are prone to disagreement, but some tension is the positive thing. When we experience conflict, research find we generate more original solutions. Okay, tension से अच्छे solutions आते हैं. Fine, we know that. I have found in my own research, if people are asked to meet two goals that appear to be at odds, their ideas are more innovative. For example, invited one to use limited supply to build prototypes. Some work build novel, other cheap, and third group novel yet cheap. Because receive the highest scores were those created by people who had what appear to be conflicting goals. Of course, conflict and disagreement can take, but okay, ठीक है. तो दो conflicting goals दे दो लोगों को, वो बेटर करते हैं. तो चीप देन बनाना है या नॉवल बनाना है, अलग अलग मत बताओ. उनको बोलो नॉवल भी बनाना है और चीप भी बनाना है, तो वो अच्छा बनाएंगे. Okay, Australia, Franciscan is a restaurant where rule breaking is encouraged. Chef does not fit the usual. He's in trenches, cleaning out. When other members see the leader do, they embrace it. Okay, so leading from the front. So if you are the boss or the manager, then you have to show it from the front. Fine. तो ऐसा कुछ इसमें कुछ भी नहीं है. Again, this is a simple passage. जिसमें ये बताया गया कि जो रेबल्स होते हैं वो दे आर एबल टू फाइंड गुड सॉल्यूशन समटाइम्स. ठीक है, गुड. तो लेट्स गो स्ट्रेट टू द क्वेश्चन. देयर इज नथिंग डीप हियर टू बी अंडरस्टूड इन डिटेल. Time कितना है? 17 minutes. Okay, which of the following scenarios best exemplify the author's argument about conflict at the workplace leading to more creative solutions? Okay, best exemplifies a money management firm introduced a devil's advocate in their board meeting in order to debate about the long term. Devil advocate वो होते हैं जो basically आपको करते हैं, challenge करते हैं. They turn the things on their head and they try to look at it from different angles. तो ये तो helpful है, होता है. ये इसी तरह का है. Decent rebel जो है वो यही होता है एक तरह से, devil's advocate. इसको रख लेते हैं. Manager in IT firm choose to hire people from diverse backgrounds. So diverse background doesn't mean it is a rebel. So इसको ऑप्शन को हम हटा सकते हैं यहाँ से. HR executive put together a team of rebellious people known for their creativity in order to resolve a pressing problem. इसको रख सकते हैं क्योंकि इसमें भी rebellious लोग आ गए हैं. Okay. A brand management firm sets conflicting goals for its employees primarily to incite disagreements on how to market products. Disagreement की agreement या मतलब solution ढूंढना है कि आपको disagreement हुआ. So I don't agree with this kind of let me look at 1 and 3 more closely. Money management में devil's advocate लेके आ गया और HR executive ने rebellious लोगों को लेके आ गया creativity के लिए. प्रेसिंग प्रॉब्लम. ओके, इसमें अब एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे. प्रेसिंग प्रॉब्लम मतलब ये है कि देयर इज टाइम कंस्ट्रेंट. बट यहाँ पे ये बताया गया कि जो ये रिबेल लोग होते हैं ये स्लो करते हैं. व्हाट कुड वी डू? पर्सन इज वन ऑफ दोज हु स्विंग्स स्लोइंग डाउन. अ क्वेश्चन दैट कीप एडिंग टू द ऑप्शंस. तो इट्स ऑलवेज वर्थ रेजिस्टिंग टाइम प्रेशर. तो ये प्रेसिंग प्रॉब्लम जो है इसके लिए अगर आप रिबेल को लेके आओगे तो वो ठीक नहीं होगा. तो मैं इसको आई डोंट एग्री टू दिस गाय. आई वुड एग्री टू दिस मनी मैनेजमेंट फर्म. डेविल्स एडवोकेट को लेके आ जाओ, आपका काम होगा. ठीक है, तो लेट मी मार्क 1. लेट मी गो टू द सेकंड. Author of the passage least likely to agree with which of the following? Least likely. Okay. Rebels in the process of coming up with creative solutions cause conflict, which however can lead to better solutions. Yes, this is fine. This is fine. He will agree with it. Conflicts and difficult ethical challenges push employees to think outside the box and to come up with more creative solutions. Fine. ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी. Rule breakers who challenge the norm cause conflict and do not stick to timelines are worth emulating when there is a payoff in terms of creative solutions they offer. ठीक है. This also looks fine. तो क्या है? While troublemakers and rebels are similar in the way they deal with problems, where they do differ is the creativity of solutions. Creativity of solutions. Troublemakers and rebels. Troublemakers के बारे में इसने क्या बताया कि ये लोग और rebels, they are also people who know how to turn rule breaking into a contribution. Okay, so that means he has established the difference between a troublemaker, okay, and a rebel. So ट्रबल मेकर जो होते हैं वो सिर्फ खाली खाली टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं. मेक अदर्स वर्स ऑफ.
but there are also people who know how to turn rule breaking into a contribution. Rebels deserve our respect and attention because they have a lot to teach us. So there is a difference which has been drawn in between troublemakers and rebels. So they are similar in the way they deal with the problems. ठीक है, दोनों लड़ते रहते हैं लोगों से, लेकिन क्रिएटिविटी ऑफ सोल्यूशन, तो ट्रबल मेकर तो कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा, तो उसकी क्रिएटिविटी कहाँ पे हो गई? तो इसलिए यही मुझे लग रहा है, क्योंकि बाकी तो सारी चीजों में कोई ऐसा ऐसा नजर नहीं आ रहा मुझे, तो मैं आई गो विथ फोर्थ ईयर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिबंक्ड कॉन्ट्रडिक्ट्स. ओके, आ गया हमारा डबल नेगेटिव वाला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इफ डिबंक्ड, डिबंक मींस इफ फॉल्स, contradicts, that means if true, supports the author's argument in the last paragraph. Fine. So we have to look for a statement which is as it is supporting the author's argument in the last paragraph. Last paragraph में ऑस्ट्रेलिया फ्रांसिस्काना की बात हो रही है, रूल ब्रेकिंग राइट फ्रॉम द टॉप. ओके, सो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कि आप खुद करके दिखाओ एंड देन द टीम विल आल्सो फॉलो. फाइन. तो विच इज द वन दैट सपोर्ट्स इट? तो एटीट्यूड डिस्प्लेड बाय लीडर्स टुवर्ड रूल ब्रेकिंग इज इंपॉर्टेंट इन शेपिंग द एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉयज. फाइन, दिस लुक्स एब्सोल्युटली क्लियर, कोई दिक्कत नहीं दिख रही मुझे इसमें. Employees should be given greater creative freedom than their manager. ऐसा नहीं, this is not correct. Rebels do not require a conducive environment. No. This is exactly opposite. Rebels do require a conducive environment that is to be provided by the manager. So 2 and 3 are eliminated. Rule breakers tend to exploit the latitude given to them in terms of coming up with creative ideas and solutions. Tend to exploit the latitude given to them in terms of coming up with creative ideas and solutions. Exploit. सी, एक्सप्लॉइट का मतलब तो 2 तरीके से होता है यार. एक्सप्लॉइट करना मतलब कि उसको मिसयूज करना भी होता है, और एक्सप्लॉइट करना मतलब कि उसको इसका एडवांटेज, उसका फायदा उठाना, टू यूटिलाइज इट टू द फुल एक्सटेंट. तो ये क्या बोलना चाह रहा है? एक्सप्लॉइट द लैटिट्यूड मींस ही वांट्स, ही इज कन्वेज दैट आप उसको यूज करते हो या आप उसको मिसयूज करते हो. सो यार ये तो आई थिंक दिस इज आई डोंट नो, आई कैन नॉट मेक सेंस ऑफ इट. ऑथर डिस्प्लेड द एटीट्यूड डिस्प्लेड बाय लीडर, ये फर्स्ट तो बिल्कुल ही करेक्ट है. Okay, first is absolutely correct. There is no doubt about this. But this fourth, if अगर exploit में ये कह रहा है कि negative exploit है तो फिर ये गलत है, लेकिन अगर ये positive exploit है तो सही है, तो हम ये कैसे जज करेंगे? तो इसके लिए मैं तो 1 पे लगा दूंगा, because I'll take my chance here. Okay, but this is not correct. यार 2 आंसर एक से सही हो जाएंगे. So this is the wrong word to use here. Let me go to the next one. Okay, time 12 मिनट बचे. To the passage, the author succeeds in conveying all of the following except receptivity to conflict of ideas and leveraging tensions in collaborating messaging encourages creativity. ठीक, fine, perfect. Setting constraints on personal initiative might seem counterintuitive, but such constraints increase the freedom and motivation to deviate from the norm. Setting constraints might seem counterintuitive, but such constraints increase the freedom. Constraints मतलब कि आप उसको freedom नहीं दे रहे हो, तो how will he perform? So this doesn't look good. Leaders should act as examples for their subordinates in challenging environment. ये तो ठीक है. In difficult ethical could do versus action boils down to perceived constriction due to trade-offs. क्या बोल रहा है? Perceived constriction due to trade-off. Could do और उसमें approaching problems with should do trade-off choice thinking answers. When you think could, we should say open-minded or trade inspire us to. I don't know. I'm a little confused in this. इसको अभी थोड़ा सा रख देता हूँ मैं भी, ठीक है? I'm not very sure in this. Let me go to the which passage should I go? Let me go to the taxonomy. ठीक है, ये मुझे better लग रहा है. I got now 11 minutes remaining. मुझे एक पैसेज और कुछ हाथ मारना इधर उधर, और एक मेरा एक वो भी बचा हुआ है समरी का क्वेश्चन. तो let me see. 4 important ideas emerge from Mackosic's taxonomy of genetic diseases. Realize that mutations can cause diverse manifestations and diverse. Second, precise converse was true. Multiple genes could influence single phase. Blood pressure is regulated by. ठीक है, ये तो fine. Abnormalities, hypertension is a genetic disease. There no gene. Fine. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी. Third insight is penetrance or expressivity or fruit fly. Third, certain genes become actualized into phenotype. They are phenometrical. Gene that causes facets to appear is temperature. Other gene changes the morphology. Okay, incomplete penetrance होने से जरूरी नहीं कि disease हो आपको. Several examples of incomplete penetrance. For some disorders, such as Tay-Sachs, penetrance was largely complete. The inheritance of genetic mutation, but for all the human disease, actual effect of gene far more complex. In breast cancer, this is not all women mutation. Okay, तो incomplete penetration से जरूरी नहीं है कि आपका कैंसर हो. Fine. Fourth insight is quite pivotal. Mutations are just variations. Mutation is a statistical, not a pathological. तो mutation pathological में जरूरी नहीं कि उससे बीमारी हो. It is just a statistical entity. Mutation doesn't imply disease, nor does it imply gain or loss. In formal sense, the mutation is defined by only deviation from the norm. That is right.
Mutation is statistical rather than normative. By itself can provide no real information. Definition of disease rests on specific disabilities caused by incongruity between the mutation, circumstances, survival, not mutation. A child with fiercest to spend his days as a scratching mismatch, but another child with a different and rarer variant of autism may possibly hyperactive situation. ठीक है, चलो तो इसमें से मोटा मोटा मुझे समझ में आ गया, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, बिकॉज आई वांट टू मैक्सिमाइज माय अटेम्प्ट्स, सो मे बी लास्ट पैसेज पे भी हाथ मारने की इच्छा है. The expression a tangle of strings controlling a puppet's arm has been used to explain. ये पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है कि many genes tug and push the blood of the body like the tangle of strings controlling a puppet thumb. ठीक है, तो how McCusick's second insight into genetic disease contradicts the first. कॉन्ट्रडिक्शन की बात तो नहीं हो रही है इसमें. पहला बोल रहा है कि एक जीन के म्यूटेशन से बहुत सारे डाइवर्स मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, और दूसरी तरफ ऑपोजिट भी ट्रू है, तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है, दोनों चीजें साथ साथ एग्जिस्ट कर रही हैं. वन डज नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द अदर, सो दिस इज नॉट करेक्ट. व्हाई हाइपरटेंशन इजंट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अ जेनेटिक डिजीज, ये तो बोल रहा है यहाँ पे. इट इज परफेक्टली एक्यूरेट टू से हाइपरटेंशन इज अ जेनेटिक डिजीज, सो दिस सेकंड इज नॉट करेक्ट. physiology isn't controlled by one but several genes at the same time. Physiology is in control. यहाँ तो ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, तो प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेवरल जीन्स. मेनी जीन्स टग एंड पुश द प्रेशर. यस, फोर्थ इज शुड बी द करेक्ट आंसर. Okay, from the example of breast cancer and Tay-Sachs, it cannot be understood. So breast cancer और Tay-Sachs में इसलिए है penetration नहीं होता है, penetrance and expressivity नहीं होता है, right? Incomplete penetrance, ठीक है. तो इसमें Tay-Sachs disease में और ये हो गया. So penetrance in the case of former is complete, whereas the latter it is largely complete. Incomplete and complete, it cannot be understood. That penetrance in case of the former. So Tay-Sachs में क्या बोल रहा है? Tay-Sachs में penetrance was largely complete, inheritance virtually guaranteed. मतलब कि अगर है तो penetrance मतलब 100% है, तो then breast cancer में जरूरी नहीं है. For other diseases it was more complex. Breast cancer increases but not all women. So this looks okay. So this is not the answer. The effect of gene mutation on development of a disorder isn't dependent on the. ये भी सही है, evidence में नहीं है. It is possible to identify for most gene mutation whether the mutation guarantees the occurrence before. नहीं, ये नहीं ठीक लग रहा. Some gene variants responsible for may not have the penetrance. Yes, 3 looks to be correct here. The author explains that a mutation is statistical rather than normative. Okay, ये last में बताया इसने statistical और normative वाली बात, एक बार वापस पढ़ना पड़ेगी. कहाँ गया ये statistical and normative? The fourth insight, mutations are variations. Mutation is a statistical, not a pathological or moral one. Okay, मतलब कि जरूरी नहीं है कि ये आपको हार्मफुल हो या कोई ऐसा मॉरल वगैरह कुछ नहीं है. म्यूटेशन डजंट इंप्लाई डिजीज. इनफॉर्मल से डिफाइंड बाय ओनली डेविएशन फ्रॉम द नॉर्म. ओके, फाइन. सो द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशन डजंट गारंटी द ऑनसेट ऑफ अ डिसऑर्डर. ये तो नहीं बोल रहा है ये. एंड म्यूटेशन नीड नॉट नेसेसरली बी ईदर बेनिफिशियल और मैलिशियस. यस, ये बोल रहा है ना कि म्यूटेशन इज नॉट, इट इज जस्ट अ स्टैटिस्टिकल एंटिटी, नॉट अ पैथोलॉजिकल और मॉरल. सो दिस लुक्स सेकंड ओके. Environments and not mutation trigger disease. ऐसा नहीं बोल रहा है. Just variations which may not always be inherited. No, inheritance की बात नहीं हुई इस पैराग्राफ में, तो I would go with 2 here. May not necessarily be this. Okay, which of the following will the author be most likely to approve on the basis of ideas discussed? Research into correlation between mutation, study of correlation between penetrance, research into possible reasons behind incomplete penetrance, study of how hyperfunctionality arises due to. ये क्या क्वेश्चन है यार? Most likely to approve based on the ideas. Research in correlation between mutations, correlation between penetrance, for a possible reason. Sorry, ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किस बेसिस पे डिसाइड करूंगा. How hyper, ये डी तो नहीं है. Okay, possible reasons behind, ये हो सकता है. Study correlation between, ये भी हो सकता है. Sorry, I am not able to figure out. ये तो this is a little absurd kind of question, तो इसको मैं छोड़ देना पसंद करूंगा. Let me now, I've got 5 minutes 28 left. तो let me see, इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन देख के ट्रांसह्यूमनिज्म का कर सकता हूँ क्या? लेट मी इवैल्यूएट. ओके, क्वेश्चन देखता हूँ. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पेनल्टीमेट पार्ट? ओके, फैंटास्टिक. पेनल्टीमेट से क्या इन्फर कर सकते हैं? द फैक्ट दैट मच ऑफ द इम्पेटस फॉर एस्टैब्लिशिंग सच एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ ट्रांसह्यूमन कम्स फ्रॉम सिलिकॉन वैली इज नॉट लॉस्ट. It is one of the world's richest regions. Many of those who question the values warn that it risks creating technology that deeper guilt gulfs already divided where only some people will be able to afford. Okay, तो ये कह रहा है कि सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसके कारण इनइक्वालिटी और बढ़ जाएगी. तो ऐसा ऑप्शन देखें क्या कहीं पे? ट्रांसह्यूमन टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव एंड नॉट एवरीवन विल बी एबल टू अफोर्ड. यस, ट्रांसह्यूमन हैज रिसीव मोर सपोर्ट फ्रॉम द पीपल. ऐसा नहीं बोल रहा है कि इट हैज सपोर्ट. इम्पेटस फॉर एस्टैब्लिशिंग कम्स फ्रॉम दिस.
तो transhuman movement has received most support from the people. Can be inferred from this. Is not lost. But ये point नहीं है इसका. This may look literally to be okay. There is a great economic divide in California and Silicon Valley. Divide, no, ऐसा नहीं है कि California और Silicon Valley में divide है. This is wrong. Distortion. Critics disapprove of transhuman because only the rich benefit. No, this is not correct. So one is a very clear answer here. तो हमें एक question आराम से मिल गया इसमें बिना कुछ ज़्यादा पढ़े हुए. Second question है क्या कुछ ऐसा? Which of the following examples is least likely to raise ethical dilemmas? Ethical dilemmas की कहीं पे बात हुई? Let me quickly scan. Is it a desirable, spectacular rewards? There is no one human enhancement becoming items such as power, clothing, typically discrete, medical made to injured, sick, then adopted by healthy. We are now approaching kind of tag. Okay, question is where technology reaches level. Let me read this चार option देखता हूँ मैं. Recently, 25-year-old Amy had a stent installed in her heart as she fears her arteries may become weak. तो ये बेसिकली इसको पहले से ही लग रहा है, तो इसने अपने आप को पहले से ही सुधारने की कोशिश कर रही है, तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है इसमें. जे कंप्यूटर प्रोग्रामर enabled टू वर्क ऑन लॉन्गर आवर्स. लिजी अंडरवेंट टू रिकैप्चर द लॉस्ट ब्यूटी. ओके. मिखाइल रिप्लेस बोथ द लिम्स ही हैड लॉस्ट. ओके, ठीक है. तो अब तो ये क्लियर हो गया हमको कि देखो जो आदमी ने ऑलरेडी लूज कर दिए हैं पैर अपने, वो अगर रिप्लेस करवा रहा है तो वो तो एथिकली होगा, लेकिन बाकी के लोग जो है अपने आप को एनहांस करने के लिए, तो ट्रांसह्यूमनिज्म में एनहांस करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ बता रहा है. तो आई वुड गो विथ 4 हियर. Okay, then let me look at the next question here. Which of the following? नहीं, ये तो छोड़ देते हैं इसको. I am not, I don't think I'll attempt this. इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? Inferred about transhumanism. नहीं, ये भी नहीं लगता. अब मेरे पास में 3 मिनट बचे हैं. Let me just quickly wrap up एक क्वेश्चन जो मेरा यहाँ पे बच गया था, इसको पहले मैं खत्म करके फिर मैं चले जाता हूँ समरी पे. Which of the following would the author most likely to approve? नहीं, ये नहीं है. This one, sorry. Conveying all of the following. Receptivity to conflict of ideas and leveraging tension in collaborating decision making encourages creative thinking. Setting constraints तो नहीं है. Leader should set an example. ये भी है, ठीक है. Difficult could do should boil down to the perceived constriction due to trade-off. Okay, तो ठीक है. इसमें मुझे ये थर्ड और सेकंड पे लगाना ठीक लग रहा है, because rest of the things can be inferred. So let me put it down second here, and let me now go to the last thing, which is my this question, and then I will wind up. Domination is not only viewed as a structure of power that demands obedience, but as a structure of power that demands obedience resulting from the will to obey. Okay, domination as a probability of finding obedience to a particular mandate can be based on various motives. Kind of pretension that the holders of power have for the legitimacy of their power figure configures traditional. Traditional is based on the appeal of sanctity of this, whereas charismatic domination is based on this. Okay, domination is not only viewed as a structure of power that demands this obedience, but is not only viewed as a structure that demands obedience. Okay, it is a structure of power that demands obedience resulting from the will to obey. Okay, मतलब आपका obedience ही नहीं बल्कि will to obey भी होनी चाहिए. Domination as a probability of finding obedience to a particular can be based on various motives. Okay, तो various motives पे आपको होता है इसमें legitimacy देने के लिए traditional, charismatic and rational legal. Traditional is based on sanctity of customs. Charismatic is on the personal gift, and rational legal is based on rules and statutes. Okay, तो 3 तरीके से. Domination demands willful conformity rooted in the respect for customs for a charismatic individual or an office of authority. Willful conformity rooted in respect for customs is rooted in respect for customs. Those who like dominating expect others not just to obey, but obey wholeheartedly, not out of fear. ये तो ठीक नहीं था. Power structure of dominance with expect submission have their foundation in hierarchy, in customs. Domination expectation of willful submissiveness seeks legitimacy in traditional, personal charm or in the law. Foundations in hierarchy, third में इसको तो eliminate कर सकते हैं. 40 सेकंड बचे. This is not correct. Customs or in individual's command. Those who like dominating others not just to obey but wholeheartedly out of fear. But ये तो गलत है, इसमें तो आधी चीजें बताई नहीं है. 2 or 3 एलिमेंट हो गए. Demands willful conformity rooted in the respect for customs, charismatic individual or an office for authority. Willful conformity, expectation of willful submissiveness seeks legitimacy. Okay, इसमें ये कह रहा है कि seeks legitimacy. यहाँ पे भी बोल रहा है कि have the legitimacy of the power. तो इसलिए I will go with 4 here. तो हो गया. चलो, I think that should be it. I don't think I've got time for anything else. Okay, so obviously now I'll leave this. I'll not be attempting the LR and all that. So let me just stop the sharing and let it be there. Okay, all right. So we will have a quick 5-minute discussion on this. That was there any learning out of this? Do you think? Sir, भगवान हो क्या आप? हाँ? भगवान हो क्या आप?
क्यों? अभी एक मिनट, एक एक करके हाथ उठा के बोलिए क्या क्या बोलना चाह रहे थे, कुछ क्या हो गया? सर इतनी हम्म। इतनी इतनी स्पीड और इतनी लॉजिकली सर, मतलब कैसे? नहीं वो तो अभी देखो, वो छोड़ो, अभी आप ये बताओ कि इससे क्या सीखने को मिला, ये बताओ पहले। सर वो तो मैं लो। लॉस्ट हो जाता हूँ बीच में, क्लियर थिंकिंग नहीं रहती। हाँ। मैं मतलब आरसी करता हूँ तो आरसी में मतलब आरसी पढ़ लिया एक बारी में, क्वेश्चन करूंगा मैं, दो हम्म। क्वेश्चन सही हो जाएंगे, उसके बाद लॉस्ट हो जाऊंगा, तो दो अगले दो क्वेश्चन गलत कर दूंगा। देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये जो पैसेजेस थे ना इसमें, ये पैसेजेस स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ठीक है, जो पैसेजेस, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ मेरा जो थॉट प्रोसेस था इसमें, कि जैसे ये जो समरी थी लास्ट वाली, इस तरह के ज्यादा अगर होते ना तो फिर गड़बड़ हो जाती, मतलब फिर इतने अटेम्प्ट नहीं निकल पाते हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि आप देखोगे कि जो पैसेजेस होते हैं ना उसमें इस तरह के डेंस चीजें होती है, मतलब वो कोई पॉलिटिक्स का कोई लेके बैठ जाएंगे, कुछ और चीज लेके बैठ जाएंगे, तो उसमें क्या होता है कि फिर ये जो पैसेज थे देखो कहानी जैसी थी। बर्मुडा ट्रायंगल वो तो बहुत ही इजी पैसेज थे। ओके, सेकंड उसके बाद में जो ट्रबल मेकर था उसमें भी कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये था कि रिबेल बन जाओ और आप क्रिएटिविटी लो, बढ़ा लो। ठीक है, तीसरा जो था टेक्सोनॉमी, उसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात थी, लेकिन आई एम कंफर्टेबल विद ऑल दिस जीन्स एंड ऑल दिस डार्विन वाले और जितने भी ये होते हैं, तो इससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ट्रांस ह्यूमरिज्म में मैंने, आपने देखा कि मैंने तो लास्ट में जाके फॉर्चुनेटली आई कुड फाइंड 2 क्वेश्चन जो कि मतलब अटेम्प्ट हो गए। तो ये भी एक है। और उसमें डेलिमा वाला भी मिल जाता, सेकंड पैराग्राफ में था, पर मैंने सोचा बीच में तो नहीं बोल सकता ये नहीं नहीं, बात। बीच में नहीं ना, देखो अब आपने, अगर मुझे नहीं पता ना, मैंने तो उसमें तो सिर्फ देखा कि 2 अगर मुझे मिल जाते हैं तो ठीक है, विद अ फेयर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस आई कुड मार्क इट। तो ये मतलब थॉट प्रोसेस थी। ठीक है, और ओके, एनी अदर? यस, गौतम। Well, I hope the speed which you are reading the RC, it was so stunned, and the questions, dealing of the questions and the options, eliminating the options, I found it very irrational because in the last paragraph, only going through the options and eliminating the other things, I find it very interesting because sometimes when I'm reading the RC, if you see one RC, it was so dense, I forget the things which I have read already. हम्म। So नो by सो, this, I understood how to ओके attempt or else how to go ओके through the options, eliminate ओके the options. ओके ओके ओके, So ग्रेट ग्रेट। यस, वंशिका। ओके, भुवन, क्विक, हाँ क्विक, क्योंकि मुझे जाना है, तो आई विल हैव क्विक डिस्कशन देन आई लीव। सर वो बाकी अटेम्प्ट स्ट्रेटजी तो काफी मतलब जबरदस्त थी सर। मतलब जैसे मैं तो जब करता हूँ ना, लाइक जैसे अगर मेरे को दो इजी दिख गए, मतलब इसके बाद तो मैं काफी हद तक रुक जाता, काफी मैं स्टक भी बहुत होता हूँ। तो ये हम्म। काफी देखा स्टक नहीं होता है, मतलब जैसे हुआ नहीं नहीं हुआ तो छोड़ो, आगे नहीं बढ़ो देखो, मतलब। वो भी क्या है ना, अलग अलग टाइप की है, जैसे मैं आपको बताया, वही बता रहा हूँ ना, एक बीच में एक मौका आई थी जिसमें वो बहुत ही गंदी थी, उसमें मतलब पैसेज में कोई आपको, देखो ये क्या होता है ना, सी आई टेल यू, टुडे आल्सो आई डिड दो सिमकैट पैसेजेस आल्सो, एंड आई फाउंड द वन फर्स्ट एंड सेकंड व्हिच आई हैव गिवन यू टुडे वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब वो तो पढ़ के इतना, सेकंड पैसेज तो पढ़ के इतना अच्छा लगा ना कि यार कुछ रीड करके कुछ जैसे मजा आ जाता है, एंटी फ्रेजिलिटी वाला जो था। तो कभी कभी क्या है कि आपको पैसेज ऐसे मिल जाते हैं, कभी कभी ऐसे उल जुलूल मिल जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली यू स्टार्ट फीलिंग, सी इसमें जैसे स्टार्ट हुआ बर्मुडा ट्रायंगल, इजी था और उसको कर लिया, तो आपको क्या है कि वो एक फीडबैक लूप है, देन यू स्टार्ट फीलिंग मोर एंड मोर हंग्री कि ठीक है अब देखें क्या आता है। अगर पहला ही ऐसा उल्टा सीधा और मतलब बिल्कुल ही सेंस नहीं बना रहा हो वो मिल जाते हैं ना, तो जैसे मैंने शुरू शुरू के वीए के क्वेश्चन करे तो मुझे डिफिकल्ट लगे, मुझे लगा कि थोड़ी डिफिकल्ट है। ओके, एंड देन मे बी देन ग्रेजुअली इट स्टार्टेड बिकमिंग ओके, तो इनिशियली आई टुक लिटिल मोर टाइम इन द वीए देन आई वुड हैव वांटेड। ओके चलो, हर्षित क्विकली। सर मेरे को एज सच मतलब सीखने को तो बहुत ही कुछ मिला, लेकिन सर एक ये डाउट था कि जिस स्पीड से आपने, जैसे सर आपने पहली आरसी 6.5 मिनट में करी थी, मतलब आई वाज ट्रैकिंग आपने कितने टाइम में क्या करा, तो सर वो हम लोगों के लिए पॉसिबल है? और अगर यस है, इन मतलब इस 2 महीने में अगर हम लोग इसको नहीं पॉसिबल कर सकते नहीं हैं यार तो देखो, कैसे साढ़े करें? छः, यार 6.5 मिनट की तो मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ ना, आप तो 8 मिनट में करो तो वही बहुत है। आपको यस सर। कहाँ मैंने बोला कि आप 6.5 मिनट में करो, मैं तो आपको यस बोलता सर। हूँ आप 8 मिनट में करो, 9 मिनट में करो, तो भी, लेकिन देखो यस छोड़ना आना चाहिए ना, जैसे मैंने आपने देखा मैंने किस किस क्वेश्चन को किस टाइम पे छोड़ दिया। जैसे यस एक सर। यस क्वेश्चन था जिसमें वो स्टडी वाला था, जो कि मुझे बिल्कुल ही मतलब अब्सर्ड लग रहा था, मैं उसमें अननेसेसरली टाइम वेस्ट करता, तो आई कुड हैव मिस्ड अटेम्प्टिंग मे बी 1 और 2 क्वेश्चंस इन दी अदर वन। तो वो आपको एक, देखो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखना है कि इसमें से यस मैक्सिमाइज सर। कैसे कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू यस सर। लुक एट इट इन अ रिजिड सेंस। ओके, यस। बाकी सो आई रियलाइज्ड कि क्वेश्चन करते करते मोमेंटम नहीं छोड़ना है पैसेज का। मेरे साथ मोमेंटम कई नहीं बार, छोड़ना है।
हाँ सर, मेरे साथ हम्म। कई बार ही होता है कि मैं कोई लाइन होती है वो समझ में नहीं आ रही होती तो मैं उसे वापस रीड नहीं करती नहीं, हूँ। आपको देखो मैंने देखो इसमें कितनी क्विकली और मतलब मेन आइडिया आपको उसमें डिसाइवर करना है। अगर कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, मतलब उसको आप उसको अननेसेसरली डोंट गेट स्टक देयर, मतलब आपको तो मूव करते रहना है। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मूव करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, मतलब बहुत आपको एक निम्बल तरीके से जाना है। आपको अटक के कहीं पे बैठ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यस सर, मतलब मेरे साथ होता है कि मैं उसको समझने के लिए उसे 2-3 बार ही रीड करती हूँ नहीं तो नहीं नहीं मेरा नहीं मोमेंटम नहीं ब्रेक हो जाता है तो वो नहीं, नहीं मतलब देखो करती। वो चीज अगर नहीं समझ में आ रही तो आगे बढ़ जाओ, आगे से समझने की कोशिश करो। और नहीं हो रहा तो क्वेश्चन पे चले जाओ, क्वेश्चन के थ्रू देन कम बैक। तो ऐसे करके अलग अलग तरीके से आप मतलब एक ही नहीं फॉलो कर सकते। ओके सागर। सर दो चीज़ें आई थिंक। एक तो जो आपका मतलब रेशियो था पैसेज पढ़ने का और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, मतलब मेरा काफ़ी डिफर करता था कि मैं पैसेज पे ज़्यादा टाइम लगाता था रीड करने में और क्वेश्चंस पे कम। तो वो वाला एक रेशियो मतलब आई थिंक हम्म। कि वो मैं सीख जाऊंगा कि मतलब हाँ पैसेज जल्दी हाँ, रीड। पैसेज देखो मैंने पैसेज पढ़ने में मतलब एवरेज में बता रहा हूँ ना आपको, 2 मिनट, मतलब अगर ठीक ठाक सा पैसेज हो तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते पढ़ने में। यस। कोई भी मतलब डिफिकल्ट होता है तो ठीक है, ज्यादा नहीं लग जाता है 3, लेकिन 2 मिनट मतलब माई एंडेवर इज टू रीड इट इन 2 मिनट्स, जितना मतलब जिस्ट ले सकते हो एक बार में। तो वो आपको यस। थोड़ा सा देखना है अपना रेशियो, आपका क्या रेशियो है। तो अगर आपका रेशियो स्क्यूड है तो आपको उसको ठीक करने की जरूरत है ना। सो दैट्स अ गुड पॉइंट। ये एंड समन। सर एक हाँ और चीज़ थी। हाँ हाँ। सेकंड चीज, जैसे आप क्रिटिकली अपने आप को हर क्वेश्चन में वैल्यूएट कर रहे थे या फिर मतलब आप अपने आप से ही डिबेट कर रहे थे कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये अपोज कर दिया उस चीज को। सर वो वाला पॉइंट कभी कभी बीच में क्वेश्चंस में रह जाते हैं कि अपनी गट फीलिंग पे भी मार्क कर देते हैं। हम्म। तो वो सर आई थिंक मतलब ये वाली चीज मैं अप्लाई करूंगा एक्टिवली। हाँ हाँ, ये आप देखो पैसिव रीडिंग और एक्टिव रीडिंग में जो बताता हूँ आपको फर्क यही होता है। पैसिव रीडिंग में आप सिर्फ एक्सेप्ट करते रहते हो सामने वाले, एक्टिव रीडिंग में आप क्वेश्चन करते हो। तो एक्टिव रीडिंग जब आप करोगे ना, इवन पैसेज पढ़ते पढ़ते या इवन क्वेश्चन करते करते और ऑप्शन करते करते, तो आपको ज्यादा कन्विक्शन आएगा मार्क करते हुए। यस सर। ओके ये समन। नहीं सर, मतलब अच्छा था, बट मेरे को एक चीज, जैसे आप इतने, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल वाला जो था वो बहुत लेंदी था, बट आपने उसमें सिर्फ वही वाले पॉइंट्स पढ़े जो इंपॉर्टेंट थे, वो मेरे को समझ नहीं आया, मतलब वो कैसे करें। नहीं, क्योंकि आप देखो बर्मुडा ट्रायंगल वाला तो प्योर स्टोरी, ठीक है। उसमें उसका उसने जिस तरीके से बताया था शुरू में कि भाई ठीक है वहाँ बहुत सारी चीजें घूम गई, शेक्सपियर ने भी ये कहा था उसको। उसके बाद वो वहाँ पे आया, एक ट्रेनर आया, वो क्या वो अपना फ्लीट लेके वो घूम गया। उसके बाद में ढूंढने आया उसको, वो घूम गया। तो उसके बाद में फिर पता पड़ा कि उसका कर्ज फैलता गया और वो दूर दूर तक मिला। और फिर लास्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट था उसमें। देखो बीच की डिटेल्स जो है ना वो आपको खा जानी चाहिए कहीं, अननेसेसरी डिटेल्स में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए हमको। बट आपको तब भी इतना याद कैसे रहा, मतलब आपने इतना जल्दी पढ़ भी लिया और कॉम्प्रिहेंड भी कर लिया, वही मेरे को। नहीं तो उसमें ऐसा था क्या, वो तो स्टोरी जैसा था ना वो वाला पैसेज, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। बट वैसा स्किल डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हैं सर? नहीं वैसा वही मतलब आप वही कर सकते हो ना कि जैसे जो बीच बीच की जो जैसे आइटम जैसे रीड कर रहे हो, तो उसमें जो अननेसेसरी डिटेल है उसको स्किप करो। जैसे नाम दिया हुआ है, जैसे उसकी यूनिट का नाम दिया हुआ है, उस आदमी का नाम दिया हुआ है, उसके साथ कितने वो थे वो स्किप करते जाओ। जैसे उसमें 5 थे ये उस टाइम पे, फिर बाद में जाके मैंने चेक किया कि उसमें 5 लिखा है उसमें, है ना। तो कई चीजें जैसे वो कर्स वाली बात थी, तो वो एंड में मेरे को शुरू में एक बार दिख गया था इसका आंसर, ठीक है एंड में चले गए। तो वैसे करके आप करोगे ना तो धीरे धीरे फिर इंप्रूव होगा। ओके सर। ऑलराइट ओके चलो रवि, क्विकली राउंड लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन, आई हैव टू लीव। सर वीए के लिए कुछ बता देते सर, वीए के लिए सर। हाँ वीए के लिए क्या है। सर उसका कैसे आप इतना फास्ट किए सर, आपका बहुत नहीं तेजी में कहाँ सर, फास्ट आपका किए शुरू मैंने में यार, तेजी ये से। तो मैंने अपने जो मैं जितने टाइम से करता हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया मैंने, क्योंकि इसमें पहला वाला जो था वो मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा, मुझे पता नहीं वो यूरोप वाला जो था। बाकी के जो थे वो भी पैसे जो समरी थे वो थोड़े एक ठीक थी, बाकी थोड़े से डिफिकल्ट थे। इलिमिनेट कैसे किए सर आप, समरी में और सर वो जंबल तो में यार बता देखो वो दीजिए तो सर। अब आप जैसे मेरे सेशन आप अटेंड करोगे ना, जैसे आप इसमें टेलीग्राम पे आप रिव्यूज देखो मेरे जितने भी मैंने किए हुए हैं, और नहीं है तो फिर क्लास ज्वाइन करो, तो फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे करते हैं, है ना। वो तो मतलब प्रोसेस है पूरी, और पूरा वो मतलब वो तो वैसे एक सेशन में तो नहीं हो पाएगा, है ना। उसमें बहुत सारे डिस्टॉर्शन होते हैं, एक एक करके उसको हटाते हैं। ओके चलो सर आप एक ओके वीए अलग सर। से। हाँ यस चलो क्विकली नाउ श्रुति then तनुज, हाँ बोलो। सर वीए में तो वही था जैसे आप क्लास में बताते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्टिंग सेंटेंस ढूंढ लिया एंड प्रोनाउंस को फाइंड करने की कोशिश की एंड प्रोनाउंस को लिंक करने का, अगर कहीं ही शी इट दे मेंशन्ड है तो हम्म, वो ही आपने यहाँ पे भी किया। तो वो वही चीज तो करना। सेम। हाँ वही, एंड मतलब कनेक्शन ढूंढने हैं आपको, और सारे सेंटेंसेस एकदम से डेप्थ में नहीं पढ़ने हैं आपको, हाँ सर, कनेक्शन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, हम सारी लाइन खुद एक एक नहीं लाइन नहीं पढ़ते पढ़ना, नहीं पढ़ना, read वो नहीं करते पढ़ना, हैं। दैट इज व्हाट इज द ट्रिक। यू डोंट हैव टू रीड इट इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑल द सेंटेंसेस फुल्ली, यू हैव टू क्विकली लुक एट द सेंटेंस एंड फिगर आउट द इंडिपेंडेंट वन, देन लुक आउट फॉर द mandatory pairs and then try to formulate different sequences.
यस एंड सर फॉर द आरसी मुझे जो बहुत अच्छा लगा सर, आप हम क्या करते हैं, हम एक एक लाइन रीड करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं, फिर कई बार खो जाते हैं, मतलब कहीं पैरेलली कुछ और ही कहीं चले जाते हैं, बट आपने जल्दी से स्किम किया एंड थ्रू क्वेश्चंस उसको बार बार पैसेज को हाँ read किया एग्जैक्टली जाता है। एग्जैक्टली, मतलब ये क्वेश्चंस चीज को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने समरी में भी, मतलब आपको ना क्वेश्चन को यूज करना कई बार इंपॉर्टेंट है। मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग के जो गैप्स हैं, यू कैन फुल प्लग देम थ्रू दीज थिंग्स। मतलब इनको भी अपने जैसे हथियार जैसे यूज करो। जैसे क्या होता है, हम अपनी थिंकिंग बहुत स्ट्रेट जैकेटेड रखते हैं, ठीक है, हम सिर्फ अपना थिंकिंग रखने के पैसेज में जो है वहीं से निकलेगा, ऐसा नहीं है। आपको टूल जो दिए हुए हैं, क्वेश्चन भी टूल है, एक ऑप्शन भी टूल है उसका, तो इन सबको आपको यूज करना है। ओके यस तनुज, चलो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम तनुज, देन वील वाइंड अप एंड देन रेस्ट डिस्कशन विल हैपन टुमारो। यस तनुज। जैसे सर, सर आई जस्ट वांट टू नो कि जैसे इस वाले अभी आरसी वाले केस में आपने कोई ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट नहीं बनाया, तो वो इसलिए बिकॉज वो आपको स्टार्टिंग में स्वीट स्पॉट मिल गया था बर्मुडा वाला। क्या क्या क्या, कम अगेन। सर आई वाज सेइंग कि जैसे इस वाले आरसी में आपने कोई ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट नहीं बनाया, तो इसलिए बिकॉज नहीं, कि वो ऑर्डर ऑफ आपको अटेम्प्ट बर्मुडा। बनाया ना मैंने, 1 के बाद में मैंने सबसे पहले बर्मुडा, फिर वो रूल ब्रेकर वाला, 1 और 2 बनाया ना मैंने, बनाया था शुरू शुरू में। हाँ आप तो शायद आप आए नहीं होगे, मैंने इनिशियल। शुरू में बताया था। हाँ ओके सर, ओके, मैंने मिस मैंने हो बताया गया। था शुरू शुरू में, बिल्कुल ऑर्डर बनाया था मैंने। हाँ, चलो ठीक है, ओके गाइस, तो दैट्स इट फॉर द टाइम बीइंग, वी विल डिस्कस व्हाटएवर रिमेन्स टुमारो। ओके सर आप तो एक चीज पूछ रही थी। हाँ, सर आप इतनी स्पीड में कैसे पढ़ पा रहे थे, क्योंकि मेरे को टाइम भी लगता है नहीं पढ़ वो रहे तो देखो, आरसी पढ़ने में। वो देखो, वो डेवलप करना है हमको। मैं आपको जो बताता हूँ ना, कि आपको भी रीडिंग में आपको कि दो अपने ऊपर प्रेशर डाल के कि 2 मिनट में आप उससे कैसे मैक्सिमम निकाल पाओ, या 3 मिनट में कैसे मैक्सिमम निकाल पाओ, वो आपको। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो कॉमन लिट जो है वो इसीलिए यूजफुल है, क्योंकि कॉमन लिट में आपको बीच बीच में गाइडिंग क्वेश्चन सही मिलते है हैं। ना। तो आप क्विकली रीड करके और गाइडिंग क्वेश्चन अगर सही आंसर इसमें करते जा रहे हो, तो चेक मतलब कर लो। आपको वो अपनी स्पीड एनहांस करने का वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। एंड यू कैन कीप योर सेल्फ टेस्टिंग योर सेल्फ इन बिटवीन, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही कि नहीं हो रही है ना। तो वो दैट इज अ गुड मैकेनिज्म टू डू काइंड ऑफ, देखो नॉट एग्जैक्टली, दिस इज नॉट एग्जैक्टली स्पीड रीडिंग, बट दिस इज एग्जैक्टली काइंड ऑफ रीडिंग इट इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर, जिसमें हम यूजलेस सी चीजें जो है वो साइड में कर देते हैं और मेन मेन चीजें ले लेते हैं। ओके चलो, सर इसके एक ऊपर हम लास्ट डिस्कशन थिंग। करेंगे, इसको हम सर एज जस्ट अ, हाँ सर जस्ट लास्ट थिंग सर, जैसे आपने हाँ। आइडेंटिफाई किया कैसे किया कि यार ये क्वेश्चन एब्सर्ड है और ये बेकार क्वेश्चन है। जो देखो, इसमें मेरे को क्वेश्चन बहुत ज्यादा एब्सर्ड बहुत सारे नहीं दिखे जितने इनके उसमें लगते हैं अगर, लेकिन कुछ क्वेश्चन जरूर लगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पे अटका था, वो एक्सप्लॉइट वाले क्वेश्चन पे, है ना, वो एक्सप्लॉइट किस सेंस में यूज किया मुझे नहीं समझ में आया इनमें। और दूसरा एक जो जो व्हाट कैन बी द फर्दर स्टडी, वो नहीं समझ में आया, आई डोंट नो व्हाट ही वाज saying। तो ऐसे कुछ कुछ इसमें ज्यादा नहीं मिले फॉर्चुनेटली। मतलब देखो, इसमें इतने सारे अटेम्प्ट हो भी इसलिए गए क्योंकि इसमें एक तो बर्मुडा ट्रायंगल वाला इजी पैसेज था, दूसरा वो भी इजी पैसेज था, रूल ब्रेकर वाला। ठीक है, ये 2 पैसेज इजी से, और मतलब कि इसमें टाइम नहीं लगा, इसलिए इतने इतने अटेम्प्ट हो गए, अदरवाइज इतने अटेम्प्ट नहीं होते हैं। ओके, लास्ट की अभी जो मेरे आप देखेंगे तो इसमें इतने अटेम्प्ट नहीं थे मेरे। आई जनरली डू 3 पैसेजेस एंड 8 VA, जो भी, चाहे सिम कैट हो रही हो चाहे CL हो रही हो, इतने ही होते हैं। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा लास्ट में हाथ मारने का मौका मिल गया, क्योंकि मैंने एक पैसेज में 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए। तो आई सेड कि लेट मी ट्राई टू मेक इट अप विद दिस डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर कोई मिलता है तो मिल गया फॉर्चुनेटली। फॉर्चून ऑल्सो फेवर्स द ब्रेव, ऐसे देख सकते हो उसको। ठीक है चलो, ऑल राइट, ओके भाई। सर आपको कल सुबह में कॉल कर सकता हूँ? हाँ हाँ, कल अभी भी कॉल करो यार, ठीक है। हाँ जी सर। ऑल राइट, ओके गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू सर। थैंक यू सर। So thank